हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। So today we are going to start an ISC poem which is after Blenheim written by Robert Southey। ठीक है, तो ये ICSE का एक पार्ट है पोएम का। So we are going to study this about the we are going to study about the author, about the poem in detailed explanation, and also the critical remarks and everything we are going to cover in this video. So let's get started. सो दिस इज अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट साउदी। ठीक है, तो लेट्स गेट नोन टू द ऑथर। ठीक है, हम ऑथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट साउदी वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ही वाज द पोएट लॉरिएट ऑफ हिज टाइम। He wrote this poem in 1796 about a battle that took place in Blenheim, a village in southern Germany in 1704. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि he wrote his poem in 1796 about a battle that took place in Blenheim, a village in southern Germany in 1704. ठीक है, तो ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो वॉर था उसका नाम क्या था एंड वेयर डिड इट टुक प्लेस, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. So what is the poem about? It's an anti-war poem that sharply criticizes the destruction and death caused by war. The poet uses simple narrative of a grandfather explaining his two grandchildren his own suffering about the battle, his own suffering and the suffering of many others like whom who were the victims of the battle. ठीक है, तो द ग्रैंडफादर कैन नॉट गिव एनी गुड रीजन फॉर द वॉर एंड कैन ओनली रिपेंट दैट इट वाज अ फेमस विक्ट्री. ठीक है, तो कोई जैसे कि हमें पता है वॉर का कोई अच्छा रीजन नहीं होता है. इट्स एन डिस्ट्रक्टिव अ पार्ट ऑफ अ लाइफ. दैट्स व्हाई he cannot give any explanation about it that it was a good thing or something or the other, but he always says that it was a famous victory. Obviously this was the propaganda that was indoctrinated in the common people. The poet wants to emphasize through the repetition of the lines that wars are सेंसलेस, फ्यूटाइल एंड इविल एंड दैट इन वॉर दे आर नो रियल विनर्स. ठीक है, तो यही पोएट हमें समझाना चाहते हैं कि वॉर्स आर सेंसलेस, इट हैज नो मीनिंग, फ्यूटाइल एंड इविल एंड दैट इन वॉर दे आर नो रियल विनर्स. दिस इज अ पावरफुल पोएम दैट इकोज विल्फ्रेड ओवेन्स फेमस कोट द पिटी ऑफ वॉर प्राइम. दिस पोएम इज अ वेकअप कॉल टू सीक पीसफुली सोल्यूशन टू ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स. सो हमने ऑथर के बारे में जान लिया है. अब नाउ लेट्स गेट इनटू द पोएम. इट वाज अ समर इवनिंग. ओल्ड कैस्पर्स वर्क वाज डन एंड ही बिफोर हिज कॉटेज डोर वाज सिटिंग इन द सन एंड बाय हिम स्पॉटेड ऑन द ग्रीन हिज लिटिल ग्रैंडचाइल्ड विल्हेल्माइन. ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो कैरेक्टर्स पढ़े. एक है ओल्ड कैस्पर एंड हिज लिटिल ग्रैंडचाइल्ड विल्हेल्माइन. ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर्स हमें अभी पता चले. सो द फर्स्ट स्टैंजा सेज द टोन, ओके, एंड द एटमॉस्फेयर फॉर द नरेशन एंड रिफ्लेक्शन. ओके, इट वाज अ समर इवनिंग एंड द प्लेस वाज नियर द कॉटेज ऑफ एन एल्डरली वुमन. ठीक है, घर के पास जो है, सो कैस्पर का घर के सामने, इट वाज अ मोरलेस ही वाज अ मोरल फार्मर. Okay, so Caspar was sitting in the sun before his cottage door, and his little grandchild Wilhelmine was playing in the field. So now we can come across another character, which is a Peterkin, her brother. She saw her Peterkin, her brother, roll something large round, which he beside the rivulet in playing they had found. He came to ask what he had found that was so large, smooth and round. ठीक है, तो उसे कुछ मिला था जो बहुत ही बड़ा था, स्मूथ था एंड राउंड था. रिवुलेट का मतलब होता है अ स्मॉल स्ट्रीम. इट मीन्स अ स्मॉल स्ट्रीम. रिवुलेट मीनिंग अ स्मॉल स्ट्रीम. एंड ही केम टू आस्क, ही वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड बट he came across something which was so large and smooth and round also. ठीक है, तो ये है उसका description. Old Caspar took it from the boy who stood expectant by, and then old man shook his head, and with a natural sight is some poor fellow's skull, said he who fell in the great victory. I find them in the garden, for there's many here about, and often when I go to plough, the plowshare turns them out. For 1,000 men, said he, were slain in that great victory. ठीक है, तो दिस इज अ पोएम विच इज इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. ठीक है, ये स्टोरी के फॉर्म में ये पोएम है, इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा है. ठीक है, तो ओल्ड कैस्पर जो है वो चीज़ उससे लेते हैं और उसे बोलते हैं कि ये कोई स्कल है एक आदमी का जो वॉर में मारा गया था. जब मैं यहाँ काम करता हूँ तो मुझे ऐसे बहुत सारे स्कल्स ऐसे मिलते हैं. ही हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री. ही डज नॉट से नथिंग अबाउट द वॉर, बट ही ओनली सेज दैट इट इज अ ग्रेट विक्ट्री. इन द ग्रेट विक्ट्री. ठीक है, तो ये वर्ड आपको बहुत बार मिलेगा. फर्स्ट देयर मेनी है अबाउट एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लाउ द प्लॉगशेयर टर्न्स देम राउंड. ठीक है, तो प्लॉगशेयर है उन्हें बहुत सारे ऐसे प्लग मिलते हैं, क्योंकि ऐसे स्कल्स मिलते हैं, क्योंकि उस वॉर में बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए थे. तो उन्हीं के स्कल्स वो यहाँ पर पड़े हुए हैं. नाउ टेल अस व्हाट वाज ऑल अबाउट यंग Peterkin, he cries, and little Wilhelmine looks up with wonder-waiting eyes. And now tell us about the war and what they fought for each other. So as we know, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं, तो उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ये स्कल है, यहाँ पर वॉर हुआ था, तो उन्हें जानने की बड़ी इच्छा होती है कि यहाँ वॉर क्यों हुआ था, किसके बीच में होता है, एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग अबाउट इट. सो they all become curious, and the young Peterkin cries, please tell us about that. And but little Wilhelmine looks him with wonder-waiting eyes, मतलब कुछ जानने की इच्छा से वो देख रहे थे. And now then tell us what they fought for each other. ठीक है, तो कारण क्या था, क्यों लड़ रहे थे, कुछ रीजन होगा.
It was the English, Caspar cried, who put the French to rout, and what they fought for each other I could not well make out, but everybody quoth he that was a famous victory. ठीक है, तो ये जो वॉर है वो इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था, मतलब ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, लेकिन उन्हें कोई ऐसा रीज़न नहीं पता है कि ये क्यों लड़ा गया था, लेकिन उन्हें एक चीज़ पता है जो सबने बताई, वो है कि इट वॉज अ फेमस विक्ट्री. सो हर लाइन में उन्हें यही पता चल रहा है कि इट वॉज अ फेमस विक्ट्री, बट नथिंग विद एनीथिंग विदाउट एनी बेनिफिट. So now he tells about himself, how he got affected from the war. So my father lived at Blenheim, then yon little stream hard by. They burnt his dwelling to the ground, and he was forced to fly. So with his wife and child he fled, nor had he where to rest his head. ठीक है, तो अब वो अपने बारे में बता रहे हैं. He continues saying, okay, so Caspar said in reply to the English defeated French. तो वो सब हमने पढ़ा. तो अब ये अपने बारे में बता रहे हैं कि जब वे छोटे थे तो उनका वो ब्लेनहेम में ही रहते थे, तो तभी ये वॉर हुआ था. तो ये वॉर होने के कारण इनका जो घर था वो जला दिया गया था आर्मी की तरफ से, और इन्हें यहाँ से भागना पड़ता. ही वॉज फोर्स्ड टू फ्लाई, हिज फादर वॉज फोर्स्ड टू फ्लाई. ठीक है, तो ये अपने मतलब ओल्ड कैस्पर जो है वो अपने माता पिता के साथ यहाँ से चले गए, क्योंकि यहाँ रहना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था. So with fire and sword, the country round was wasted far and wide, and many a children mother then a newborn baby had died. But things like that, you know, must be at every famous victory. ठीक है, तो फायर एंड स्वॉर्ड, जैसे कि हमें पता है कि वॉर का कंडीशन क्या होता है, एनवायरनमेंट कैसा होता है, बहुत ही फालतू का, बहुत ही सिर्फ जहाँ देखो वहीं तबाही तबाही मची रहती है. सो वही ये ओल्ड कैस्ट में बता रहे हैं कि कहीं कहीं डेड बॉडीज पड़े हुए हैं, तो कहीं एक मदर बैठी हुई है, कहीं नवजात शिशु मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी है वो मर गया है. तो वो बता रहे हैं कि जैसे कि हमेशा हर फेमस विक्ट्री के पीछे यही बैकग्राउंड होता है. बट द थिंग्स लाइक दैट यू नो यू मस्ट बी एट एवरी फेमस विक्ट्री. सो हर फेमस विक्ट्री के पीछे यही एक बैकग्राउंड होता है, यही एनवायरनमेंट होता है. So they said that it was a shocking sight after the field was won. For many thousand bodies here lay rotting in the sun, but things like that you know must be after famous victory. ठीक है, तो he says that it was a shocking sight after the field was won. मतलब जब भी लड़ाई खत्म हो गई थी, ये एक बहुत ही शॉकिंग साइट था, because many thousands of bodies were laying rotting in the sun, means were kept in the ground, but things like that you know must be after famous victory. तो हर famous victory के पीछे यही चीज़ होता है. So great praise the Duke of Marlborough won, and of good Prince Eugene. Why it was a very wicked thing, said little Wilhelmine. ठीक है, तो ये जो लड़ाई थी वो था ड्यूक ऑफ मार्लबरो एंड प्रिंस यूगिन. तो इन दोनों के बीच में ये लड़ाई था. वाई इट वॉज अ वेरी विकेट थिंग. सो द विल्हेल्माइन को लगा कि ये बहुत ही मतलब एक फालतू की चीज़ है, विकेट थिंग है. सो जो ओल्ड कैस्पर है वो कहते हैं नैना माई लिटिल गर्ल को थी इट वाज अ फेमस विक्ट्री. तो वो हर चीज़ के पीछे एक ही बात बोलते हैं, वो है इट वाज अ फेमस विक्ट्री. And everybody praised the Duke, who this great fight did win. But what good came of it at last, quoth little Peterkin. Why, that I cannot tell, said he, but what was a famous victory. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि everybody, because the Duke of Marlborough won, so everyone congratulated him on his victory. So the Peterkin asked what good of came at last, मतलब क्या अच्छा हुआ लास्ट में. तो वो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, बट मुझे एक बात पता है, that it was a famous victory. It was a famous what a famous victory. Now what are the themes covered in this poem? So पहला थीम है मैंस क्रुएल्टी टू मैन. जस्ट वॉर्स का हमें पता है कि इट्स अ फाइट बिटवीन मैन एंड मैन ओनली. द पोएम इज अ scathing commentary on the man's cruelty to man. War as seen in this poem represents the worst state of human behavior. The skull Peterkin finds, as well as though that Caspar regularly unearths while plowing his fields, are mute testimony to the horrors of war. A man kills another man to achieve this great victory. ठीक है, तो हमें पता है कि वॉर एक बहुत ही rigorous thing होता है. It represents the worst state of human behavior because nothing is there, only destruction is only we can see. A man kills another man to achieve his victory. So it is towards against humanity. So on one hand is the old Caspar, whose only concern is the great victory gained at the cost of death and devastation. On the other, they are the children who does not grasp the so-called benefits of the war. The so-called benefits of the war is the great victory achieved by the Duke of Marlborough. So the poem implies that the perpetrators of war cannot or will not suppress the ambitions that provoke war. The children, who are like many people uncorrupted by adult thinking, can readily perceive war for what is it is death and destruction. ठीक है, तो जैसे कि बच्चे जो होते हैं उन्हें पता दे आर अनकरप्टेड. ठीक है, तो उनमें कोई छल कपट कुछ नहीं होता, तो इसीलिए उन्हें वॉर पसंद नहीं आता है. दे ओनली सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन व्यू ओनली. बट वेयर एज द एल्डर्स दे सी ऑफ विनिंग, ओनली दे वांट टू विन. That's why they provoke wars.
Then the next theme is curiosity and lack of it. Children are curious by nature, as we know it. They are curious by nature. So when Pitikin finds a skull, then he brings to his grandfather and immediately asks what it is. So Caspar tells that it's the skull of a soldier in the battle. So उन्हें और जानने की इच्छा होती है. Wilhelmine also sees his grandfather from with wonder-waiting eyes. Okay, so Caspar is able to describe where the war was fought and between whom, but he cannot explain the purpose or not the benefits of the war. He had no idea about the causes. All that matters to him is the Ost and the England won a great victory against France. The Australia and England won a great victory against France. Now, third is complacency. Old Caspar unquestionably accepts the loss of the Innocentives in the Battle of Blenheim as the price of the glorious victory in the war. It seems that he has resigned himself to the fact that people to die in war. Throughout the poem, he is seen repeating that the victory was great and famous, but he is ignorant about the cause of the war. Caspar's complacency is like that of modern politicians who dismiss the deaths of the innocent people. So he's not cared about who is alive or who is dead. He's only cared about that it was a great war. ठीक है, तो उन्हें ओल्ड कैस्पर को मॉडर्न पॉलिटिशियन से कंपेयर किया गया है कि who dismisses the deaths of the innocent people in war by referring to them with the impersonal phrase collateral and damage. ठीक है, he is least bothered about who is dying or who is left alive. He is only cared about that it was a famous victory. Now, what are the styles, form and structure? जैसा मैंने बताया, it's a war poem in the form of a ballad. A ballad क्या होता है? Ballad होता है is a long narrative poem that tells a story. So it's a very important thing that what type of poem is this? Because many a times this question comes. It is hidden narration that uses different techniques. But what is it you should know about it? Then a refrain is a phrase words or group of words repeated at intervals through the time. ठीक है, तो जो word repeat किया गया है वो it was a famous victory, तो वो होता है refrain. Now, as we know, rhyming is also there. So the rhyming scheme is ABC, B and DD. या तो कोई एक चीज़ देख के आपको ये भी पूछ सकता है कि राइमिंग स्कीम इसमें क्या फॉलो की गई है. एलिटरेशन फॉलो किया गया है, विच इज़ द क्लोज कॉन्सोनेंट साउंड्स. ओके, सो रेपिटेशन इज ऑल्सो देयर, दैट there's a repetition of idea of great victory in which the English put around. ठीक है, तो जो वो बोला गया है it was a famous victory, it was a famous victory, तो वो होता है repetition जो follow किया गया है. Then is the irony. The poem After Blenheim is an anti-war poem which reflects on the horrors of war, like burned houses, civilian casualties like those of pregnant women and newborn babies and rotting corpses. It is, however, ironical that poem glorifies the outcome of the war in the form of great victory for a nation. Sorry, at the cost of huge destruction both of life and property. ठीक है, तो एक तरफ सिर्फ there's destruction of humanity. Their burned houses, like the civilian casualties are there, pregnant women are dying, newborn babies are dying. On the other hand, it's only the poem is only glorifying the outcomes of the war in the form of a great victory for a nation. ठीक है, तो जहाँ न्यूबॉर्न बेबीज, जहाँ यूथ डिस्ट्रॉय हो रहा है, जहाँ सिर्फ हर तरफ तबाही नजर आ रही है, तो वहाँ एक नेशन का ग्रोथ या फिर एक नेशन का विक्ट्री कैसे हो सकता है. Although old Caspar is aware of the damage caused by war, that too to his own family, yet he seems to be more interested and aware of the victory achieved in war, that is purpose or benefits. His gruesome descriptions followed by his casual sayings create an effect of irony in the poem. Old Caspar repeats the great victory, famous victory, यही बोले जा रहा है, लेकिन उसके फैमिली को भी इफेक्ट हुआ है, लेकिन he doesn't care about it at least because he is only concerned that it was a famous victory. It's also ironical that the masses are lured by the leaders into believing the importance of victory in the war, rather it is the purpose of the benefits of the common man. Okay, now we go to the critical remarks. What are the critical remarks are there in the poem? Robert Southey adopts an anti-war attitude in his poem After Blenheim, but arguably, he himself was not anti-war. Byron considered Southey a puzzle. On one hand, he condemned the English victory at Blenheim. On the other, he praised the Battle of Waterloo in the poet's pilgrimage to Waterloo. ठीक है, तो जो रॉबर्ट साउदी है, जो इस पोएम के ऑथर है, वो उन्हें बायरन एक पजल समझते थे, क्योंकि एक तरफ वो आफ्टर ब्लेनहेम में वॉर का डिस्ट्रक्शन बता रहे हैं, और एक पोएम है जो है बैटल ऑफ वाटरलू. ही प्रेज द बैटल. ओके, सो इन दिस ही इज कर्सिंग इट, एंड इन दैट ही इज praising it. So there are many poets who are either pro-war or anti-war. There were early poets like Richard and Rupert Brooke who glorified war by associating with the idea of honor, duty and patriotism. And Richard Lovelace in his poem To Casta Going to the War romanticizes war and believes that fight will bring him honor. Okay, so कोई दो तरह के पोएम होते हैं, पोएट्स होते हैं, एक प्रो वॉर एक एंटी वॉर. प्रो वॉर जो होते हैं, जो वॉर को सपोर्ट करते हैं कि बोलते हैं कि इट्स एन ऑनर, इट्स फॉर द ऑनर, प्रिविलेज, ड्यूटी एंड पेट्रियोटिज्म. और एक तरह के वॉर होते हैं जो एंटी वॉर होते हैं, जो सिर्फ बताते हैं कि वॉर से कुछ नहीं होता है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है. यह था वॉर के लिए. Then we come to the anti-war poem. After Blenheim has scathing criticism of the horrors, it shows that the international diplomacy, politics, and war are matters which are cut from the lives of the common man. In an outburst of praise of the heroes who won, the old Caspar is typically inhabited of honor season. ठीक है, तो ये एक anti-war poem which describes the destruction caused by the war and nothing else.
वो कुछ नहीं बता पाते हैं, वो सिर्फ यही बता पाते हैं कि ये एक सो कॉल्ड फेमस विक्ट्री है, जिसमें कुछ एट लास्ट कुछ भी हासिल नहीं होता है, सिर्फ एक विक्ट्री होता है, क्योंकि ये प्रिविलेज के लिए लड़ा गया था, नथिंग एल्स. He cannot define the benefits of the war. Okay. So the poet is unable to point out any benefit from the famous victory. He cannot point out any benefits from the victory. He only says that it was a famous victory. He cannot say any benefits because at last war से कोई benefit नहीं होता है. Right. So by making Caspar repeat that it was a great victory, the poet manages to question his greatness. What is won when everything is lost? Right. What is won when everything is lost? Moreover, the idea of boastfulness of heroes who win wars and futility of war itself is depicted by innocent children. For them, Duke of Marlborough and Prince Eugene were some shadowy figures in the remote corners of some distant past. Nevertheless, the children were unable to grasp their achievements from a human angle. Thus, the innocent children became the mouthpiece of the poet who expresses the disapproval of the war. ठीक है, तो yes, patriotism should be there. I am not telling that patriotism should not be there, but at last of the war, everything is destroyed. Both sides are destroyed. Whoever wins, that doesn't matter. Both sides are destroyed. Their army is getting destroyed. Their families are getting destroyed. But no one is scared. No one is bothered about it. ठीक है, तो जो बच्चे हैं वही बोल रहे हैं कि ये एक पॉइंटलेसनेस होता है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है. इट्स वेरी वेरी बैड थिंग बिकॉज एवरीथिंग इज लॉस्ट, राइट. वेरी गुड थिंग इज सेड अबाउट इट, दैट व्हाट इज वॉन व्हेन एवरीथिंग इज लॉस्ट, राइट. आप जीते क्या हो जब आपके पास, आप जब सब कुछ हार ही चुके हो तो आपका जीतने का कोई मतलब नहीं होता है, राइट. सो दिस वॉज द पोएम आफ्टर ब्लेनहेम विच आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. I will also provide you with the detailed notes in the description box. ठीक है, आप जाके दोनों नोट्स चेक कर ले. मैंने एक और नोट्स भी बनाया है सिर्फ आपके लिए, ये आपको मिलने में पढ़ने में सुविधा होगी. बट इफ़ अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आप नोट्स अपने बना के ही पढ़ें, क्योंकि तभी आपका जो आंसर है वो दूसरे से अलग होगा, तभी आपको जो है मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो मैंने दोनों ही नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मैं उसका लिंक भी दे दूंगी नीचे, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है. और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताएं. एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय माई email ID विच विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, तो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज सेशन. This is Riya Tiwari signing off for today. Bye bye.